What's up? Happy Monday, you guys. Monday is almost over. Happy Advanced Tuesday, you guys. क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? कैसे हो? Welcome back to my channel, The Amor Thought. I am Devyani Urf Amor, and for the ones who are watching me for the first time, स्वागत है जी आपका मेरे चैनल में. क्या हाल है? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सब सही, सब ठीक, रिपोर्ट ओके है. आज आज in all these 5 months of me creating content, today's the first time when it was really difficult for me to get myself and get to shoot. I've just had a really heavy heart, very heavy heart. Happens. There are days like those. Say hello to the coffee. You know, there are days when you think you're okay, but you realize you're not. Some memory of the past, some people of the past, and some memory, some people, they just come back to you. And the ones you do not really have very good memories with, वो फिर भी तब, if trigger is the right word, trigger नहीं करते, but then there are memories. Anyway, और बताओ, खाना पीना हो गया सबका? क्या खाया? I had aloo gobi and sabji, and my mom makes the best aloo gobi ever. And gobi is a good change. मेरे को अच्छी लगती है. आपको पसंद है? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में बताओ. I have had quite a brain-slogging day. काफ़ी लिखने की कोशिश हुई है, कुछ लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया है, एंड देन बाकी की पूरी शाम मोस्टली हैज़ बीन विद अ हेवी हार्ट, तो तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है लिखना. आई डिड राइट समथिंग, इट्स अप ऑन माई इंस्टा, यू कैन गो चेक इट आउट. सो आज के वीडियो का टॉपिक देख लिया. सही. I always confuse वीडियो का टॉपिक एंड टॉपिक का वीडियो. It happens with me. इसलिए कई बार बोलने से पहले एक बार अटकना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि सही बोला नहीं. And also good news, I have a friend who is getting married super soon. And lady, if you're watching this, congratulations. I'm super happy for you, man. I mean, you know how you've known a few people ever since you were kids yourself, and today जब अचानक से आपको न्यूज़ मिलती है कि bro, I'm getting married, you take a while to realize that damn man, इतना वक्त निकल गया. So this girl who I am talking about, who's getting married, I've known her since class 11th. And 11 साल. Anna, I'm super happy for you, babe. I am. But तुमने मेरा काम बढ़ा दिया है, काफ़ी शॉपिंग करवाने वाली हो अब तुम, because clearly
मेरे पास शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो अब वो लेने पड़ेंगे यार. नेवर माइंड, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग आई गेस. तो कर लेंगे. तुम भी क्या याद रखोगे. सो आज के वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया है. एंड इसका आइडिया मेरे को एक्चुअली एक इंस्टा पोस्ट से ही आया है. आई was scrolling, I was surfing through Insta when I came across this topic, and I was like, why not talk about it? Because content, हम उसी की तलाश में तो होते हैं यार. हम जीवन में कुछ और तलाशे न तलाशे, कंटेंट जरूर तलाश रहे होते हैं, बिकॉज इट इज ब्रेड एंड बटर. एंड बिकॉज मे बी, आई मीन आई डोंट नो, अभी तक आप में से किसी ने बताया नहीं, बट मे बी यू एंजॉय माई कॉन्टेंट ऑल्सो. या, एंड आई लव टू क्रिएट इट. सो या, ग्रोथ, मैं पर्सनली बताऊं, जितना हमने मेंटल ग्रोथ, मोस्टली फिजिकल तो फिर भी समझ में आता है, बट मेंटल ग्रोथ इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली स्लो, एंड समटाइम्स you realize it's happening, sometimes you don't. And on the days you realize कि हाँ ठीक है, there is a progress, सही रहता है, but the day, and उसके बीच में भी ना, ऐसा नहीं है कि you growing and you only growing. There are going to be setbacks, there are going to be flashbacks, there are going to be days when you will be growing and still have a memory from the past, जैसे आज मेरे साथ हो रहा है. तो yeah, but just because you have a memory from the past, revisiting you does not mean you're not growing. Let me tell you, it is not the massive changes, it is those small tiny little steps you take, the smallest changes that happen, which sometimes are seen, sometimes are not. तो वो छोटी छोटी सी ही चीजें हैं. And it is not a smooth ride. Let me tell you, the growth, your personal growth is not the smoothest of rides. For people who think it's a roller coaster, darling, roller coaster फिर भी easy है, एक बार के बाद खत्म हो जाता है. This personal growth is a never ending thing, and you will never know कि आप एक दिन अच्छे खासे होगे, खुश हो गए, हंस रहे होगे, एंड देन अचानक से कुछ ऐसा होगा एंड मूड पूरा 180 डिग्री हो जाता है, और आपको कई बार समझ भी नहीं आता. You do not know how to react to it, you do not know what to do about it, because you were trying to walk away from it, you were trying to move ahead, away from it, and then it comes back to you again. But as long as you are trying, it's all worth it. It is. Personal experience से बता रही हूँ, ठीक है? But how do we know if we're growing? How do we know that what we're trying to do is actually working, is actually taking some shape? So these are a few things that I think are marked as a growth, and this is what the growth looks like. ये मेरा personal experience है. I am not saying it is 100% true. I am only talking on the basis of what it has felt like to me. It can vary for you. And if you think it is any different, let me know in the comment section. Let me know in the email ID, and let me know in the Insta DM. Okay.
We all have different approaches, we all have different experiences. I am sharing with you my experience, what's worked for me. Let me know what works for you. Maybe I'll get something new to talk about, something new as a content, and I would love, love, love to know what does your growth look like. Okay. So the first thing is, when you growing, when you're in the process of it, and this is for me personally बहुत बड़ा है, that you start choosing peace over reacting. ऐसा नहीं है कि ट्रिगर पॉइंट्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ शामें आपकी ऐसी नहीं होती हैं जहाँ पे आप शायद अकेले बैठे हो और पुरानी यादें लौट के आ रही हैं. होता है जब वो चीज़ें अपने साथ हो रही होती है ना, और खुद अकेले बैठ के हो रही होती है, तब यू कैन क्राई इट आउट. बट व्हेन इट्स समबडी एल्स डूइंग इट, तब ना एक अलग सा ट्रिगर होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर डूइंग इट इंटेंशनली एंड you might just go all out and say things, but एक टाइम के बाद ना you realize that I don't want to react. I am done reacting to it. I am done answering questions. I don't want to go ahead with this conversation, or I do not want to indulge myself in that topic anymore. आपके लिए react करना sounds more like a waste of energy, waste of time, and also a lot of consumption of energy. So you choose to keep quiet. You just start finding peace within yourself. You start finding peace in not answering. I am a person who has most of her life had a tendency to immediately answer. मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आती थी तो मैं immediately retaliate करती थी in the first time. Now I take some time. मतलब आप एक बार बोलोगे मैं चुप हूँ, दूसरी बार मैं चुप हूँ, तीसरी बार मैं चुप हूँ, बट चौथी पांचवी बार में तो देन मैं भी चुप नहीं रहती यार. मतलब पेशेंस हर किसी का ही है, मेरा वैसे भी कम है, एंड आई एम नाउ अब एटलीस्ट पुश्ड माई पेशेंस अ लिटिल फर्दर अहेड. तो इन दैट केस वो होता है. बट व्हेन यू ग्रो यू रियलाइज कि reacting is not going to get you anywhere. Reacting is only going to drain you more. Reacting is only going to consume most part of your energy, and then you choose to keep quiet. कि यार ठीक है, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम्हें बोल के खुशी तुम बोल लो, तुम्हें अज्यूम करके खुशी तुम अज्यूम कर लो, तुम्हें मुझे अपना डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन बना के खुश होना है, तुम वही कर लो. I will still choose to keep quiet. I still choose my inner peace over reacting to anything that you're saying right now. That's point number one. Point number two, being your own validation. And do not lie to me about this, guys. We've all been a people pleaser at some point in life. We have. Be it in school, be it in college, be it in the workplace, be it anywhere, but we all have been a people pleaser at some point in time of our life. I have been also. We've constantly seeked validation outside about how we look, how we talk, how we come across, and how should our approach be, if we are reacting the right way, if what is the other person thinking about it. And whenever we felt that, okay, this whatever I have just said has annoyed somebody, we've immediately tried to go back and please them again.
you stop looking for validation. You realize that the biggest validation that you can possibly ever have is your own. I'm not saying that you go out and start becoming rude or mean to somebody. I'm not saying that. But आप एक टाइम के बाद ना आपको अपनी हाँ ही हाँ लगती है, बिकॉज आप समझ जाते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप सबको खुश नहीं रख पाओगे. Today it's going to be one person you're trying to please, tomorrow second person, third person, fourth person, and by the time you reach the fourth person, the first person is again irritated, and then you go back to the first person, and then the fourth person is irritated. कब तक करते रहोगे? You get tired, you get exhausted. Your work does not exhaust you as much as constantly seeking validation from everybody, trying to keep everybody happy does. You learn to just look for your own validation. Okay, this looks nice on me, this does not look nice on me. I am happy with what I did today, I am not happy with what I did today. I should have reacted like this, I should not have reacted like this. You become a better judge of your own actions, of how you look, how you talk, how you come across, everything. You do take feedbacks, but then you also learn to differentiate between a feedback and a criticism, because not all feedbacks are feedbacks. Most times they are criticism. And then you learn to differentiate between them, and when you learn that, it starts to affect you a little less when it is a criticism, because you know it is somebody's personal vent that they are bringing out on you. So your validation is enough for you. You realize that हर इंसान मेरा भला नहीं चाहता. हर इंसान जो कहता है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, वो नहीं चाहता. और मोस्ट पीपल जो चाहते भी हैं, उसमें वो पहले अपना भी कुछ फायदा ढूंढ रहे हैं. बहुत कम लोग हैं जो बिना अपना फायदा ढूंढे आपका भला चाहते हैं. आप उनमें से एक इंसान बन जाते हो जो अपना भला किसी रीजन के बिना सोचने लगते हो, जिसको अपनी खुशियों में खुशी मिलने लगती है, जिसके लिए अपनी हाँ हाँ है, अपनी ना में ना है. Okay, that was point number 2. Number 3, recognizing unhealthy patterns. Now it can be anything: not working out, sleeping late, not eating right, being around toxic people, entertaining things that you should not be, all of it. You start recognizing it. And ये सब कुछ एक दिन में नहीं समझ में आता है. धीरे धीरे, one day at a time, 1 minute at a time समझ में आने लगता है. And जब वो चीज़ अपने बारे में है और जब हम खुद कर रहे हैं ना, तब फिर भी सही होता है. बट व्हेन यू रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज दोज पीपल हु यू थॉट वर फ्रेंड्स or your well-wishers, they're the ones doing it to you. They're a part of that bunch who are unhealthy for you. That hurts. But you eventually start walking away from them. You realize that they could be good for your life, but they're not good for your mental peace. Staying with them could be fun for some time, but in the longer run, they are only going to exhaust you mentally. And after a certain point in time, you wouldn't know what to do, where to show up. It happens. It does. हमारा सबसे ज़्यादा बुरा चाहने वाले अक्सर हमारे सबसे करीब के लोग होते हैं. इस चीज़ को मानने में, इस चीज़ को समझने में बहुत तकलीफ होती है.
बिकॉज हमने उन पे एक टाइम पे बहुत भरोसा किया होता है। एंड ये मैं अपना बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें तो सिर्फ इसलिए की हैं बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू कीप समबडी हैप्पी एंड आई नेवर रियली एंजॉयड इट ऑल्सो. इट वॉज not me, because ever since I moved away from those people I have never gone back to it. मेरे को ना मैं लौट के गई हूँ, ना लौट के जाना मेरे कभी दिमाग में आया है, मन भी नहीं हुआ है कभी. And that's when I realized कि यार इसमें तो मैं कभी खुश थी भी नहीं. मतलब ठीक है, सबको खुश रखना था तो मैं भी कर रही थी. फिर एक वक्त ये बात समझ में आई कि जब मैं कर रही थी वो तब भी खुश नहीं थे, तो ना करके ही उन्हें ना खुश रखते थे. यू डू नॉट ऑलवेज हैव टू पुश पीपल आउट ऑफ योर लाइफ. वो अपना रास्ता खुद ही बाहर बना लेते हैं. आपको सिर्फ अपनी हाँ पे टिकना पड़ता है. You will see that ever since you start listening to yourself, a lot of people have walked out of your life. They've just made their way out. And when they're gone, once they're gone, you feel better, you feel happier, you feel more like yourself. Okay? So that was point number 3. And 4th. This is a little difficult one. This is the most time consuming one. And ये चीज़ें हम अक्सर notice नहीं करते हैं, is that you start falling in love back with your life. अचानक से जब सब कुछ सही होने लगता है, और वो सही हो रहा है, हमें ये समझ आने में वक्त लगता है, मगर जब धीरे धीरे समझ में आती है ना, आपको अपनी ही ज़िंदगी से दोबारा प्यार होने लगता है. आपको अपने सराउंडिंग से प्यार होने लगता है. जो भी आपकी लाइफ में तब लोग हैं वो आपको जेन्युइनली पसंद आने लगते हैं. आप एंड दोज आर द पीपल हु वुड एक्सेप्ट यू फॉर यू, बिकॉज तब तक काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं. तो जो वो थोड़े बहुत लोग बचे हैं ना, वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते होंगे या आपका भला चाहते होंगे. एंड falling in love with your life is addictive. It is. And I am not saying when you start falling in love with yourself, your life, you do not need somebody else. You do need people to speak to sometimes confront the confusion of your mind, to understand that what you're feeling, if it is right, if it is wrong, if it is normal, if it is not. You need people. I'm not denying that. But then you know कि हाँ, इस इंसान से मैं बात कर सकता हूँ, मैं इस इंसान से बात कर सकती हूँ. एंड ऐसा भी नहीं है कि आप जब उनसे बात कर रहे हो हर एक चीज़ वो जो बोल रहे हैं आप सब कुछ मान भी लेते हो. You started to love yourself enough to listen to everybody, but also understand, okay, this is what I want to do. This might work for me. Like I said in the beginning also, these are my personal experiences. I am not saying these are going to work for you also. Likewise, not everybody's experience, not everybody's advice works for you. It's different with everybody. It's different for everybody. You learn to differentiate those differences. Because वो कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो. जिनसे आप रिलेट कर पाते हो, those are the ones you carry with you. And the ones you do not relate to, you keep them with them. But ये जो changes होते हैं when you start growing, when you start understanding yourself, when you start to understand that how does
your mind react to certain things? How does your body react to certain things? And when you start taking control of your own things, when you stop relying on other people, that feeling is magical. It is magical. For me, it has been. I would love to know how does it feel for you. But for me, it was amazing. Amazing. Okay. So these are the 4 things that shaped my growth. That today when I look back and see that if I have grown, and these are the 4 things I see happening in my life, I realize, yes, I am growing. I have not grown completely. It is never going to be a completely grown thing ever. It is going to be an ongoing journey. The only day it is going to be completely complete is the day I am gone. But until the last second I am here, breathing, talking, the journey is still going to be on. There are going to be setbacks, there are going to be bad days, there are going to be not really bad days, but tough days, not so tough days, some really happy days, some not so happy days. But the growth is within all of this. Okay. So, as my mama said, or as my mama says, कि गुरु जी का ज्ञान खत्म हो गया. तो हाँ, गुरु जी का ज्ञान खत्म हो गया आज का. Why did I say that like that? एक बात बताओ, ये सिर्फ मेरे साथ है या आपके साथ भी है? सो क्लियरली मैं शूट करते समय फैन नहीं चला सकती बिकॉज उसकी आवाज़ भी आ जाती है, मगर एसी चलाओ तो ठंडा है, बंद कर दो तो गर्म है. मगर बाहर वेदर ऐसा है कि एसी की ज़रूरत नहीं है या फैन की ज़रूरत नहीं है. तो ये वेदर सिर्फ मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, आपको भी कंफ्यूज कर रहा है, और मेरे को दिन में 2-3 बार कंफ्यूज करता है क्योंकि ये. तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज. I'm glad I chose to get up and shoot. Not that I feel any lighter in the heart, but yeah, दिमाग कुछ तो डाइवर्ट हुआ है. एंड ये तो करना ही था. द वीडियो हैज टू गो अप बाबा. ऐसे कैसे? अपनी प्रॉब्लम्स, अपने हार्श टाइम्स अपने हैं, काम है, वो होना ही है ना? मानते तो हो, मतलब अग्री तो कर रहे हो. I feel tired, but the day is yet to get over. अभी आपको अपलोड भी करना है. अपलोड तो मैं कल होगा, बट हाँ अभी इसको एडिट करना है. एंड आई टेल यू समथिंग. सो कॉफ़ी तो हर वीडियो का एक हिस्सा ही है, और एक और चीज़ हिस्सा है. रिमेंबर लास्ट वीडियो में बताया था, some extra information that you all don't ask me for, but I still give it to you, so I'll tell you. मैं बहुत दिन से and this is, you can call this stupid all you want, I'm not denying, मैं हूँ थोड़ी सी. so हर वीडियो, मतलब of course मैं भी चैनल्स देखती हूँ, I also watch content, and हर वीडियो के एंड में एक आउट्रो वीडियो होता है. so आपने अगर मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखा है, उनमें आउट्रो वीडियो है, बट देन वो कोई अलग से आउट्रो वीडियो नहीं है, ठीक है? एंड मैं सोच रही थी कि यार ये लोग आउट्रो वीडियो अलग से कैसे बना लेते हैं. मुझे कल शाम को रियलाइज हुआ कि आउट्रो वीडियो बिल्कुल वैसे ही बन सकते हैं जैसे मैंने अपना इंट्रो वीडियो बनाया था. उसमें कुछ अलग नहीं करना था. आई हैड टू मेक अनदर स्क्रीन फॉर एन आउट्रो वीडियो, और बाकी एंड स्क्रीन तो मेरे को यूट्यूब ही दे रहा है.
That's me. ये कब का हो चुका होता है यार. Can you imagine? मैं ऐसी भी हूँ. इंट्रो वीडियो तो बनाया और मैं आउट्रो वीडियो कैसे बनाना है वो सोच रही हूँ. Devyani is like that. I am not the best person in tech. I am slightly technologically paralyzed, but getting there. धीरे धीरे getting there. हाँ ये बोल सकते हो कि 4 महीने हो गए हैं और कितना getting there, but it is like I said, it's a never-ending journey. You never stop learning. Come on, do you? You don't. Okay. So ये था आज का आपका बिना मांगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. I cannot break certain रिवाज man. Come on. है ना? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है. वैसे उसका आप करेंगे क्या वो आपके ऊपर है. मेरा काम है देना, मैंने दे दिया है. तो चलो अब I'll go edit this, prepare it to put it up tomorrow. देखना मत भूलना. And I know the visibility of growth in a day-to-day life is as minute as 0.01 maybe. And I could be wrong at that because मेरी maths खराब है, तो please पेलियो मत मेरे को. But it's the visibility of it is really slow. But while you struggle to literally be able to find that growth in your day-to-day life, like I always say, remember to be happy, because your happiness matters, you matter, and nothing matters more. And when you doubt yourself, I trust you, and I am super proud of you. मैं अभी बहुत जोर से खांसने वाली थी इसलिए रुक गई. I am extremely proud of you, and there is nothing changing it. Okay, if you like the video, go ahead, press the like button. If you think I am a friend, I can be your friend thoda sa bhi, go ahead, subscribe and press the bell icon so that you know whenever I put up a video. And if you think this video can help anybody, go ahead, share it with them. And if you want to save it with yourself, you think it helps you, all yours, कर लो सेव. ओके, बिना बताए. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, भगवान कसम, भगवान कसम, ये लेफ्ट है. अच्छा, do you know I was born a lefty but I am a righty and now practicing being an ambidextrous. Another extra ज्ञान, information. ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से. And I am going to see you super soon. Any idea for a new video, put it in the comment section or mail me or Insta DM में message कर देना. ठीक है. If you think you want somebody to speak your heart out to and you find nobody, you have me. This best friend does not have another best friend, remember. So whatever you share with me is safe with me. It's not going out anywhere. Okay, chalo, bye, good night. I hope you have a super amazing week. You achieve more than what you have as your target. You are happier than what you think you want to be, and that you always get more than you can ever dream of. I really pray that you never have to dream for something and not get it. I really pray you dream of this and you get this. Okay? Take care of yourselves. If not for yourself, take care of yourself for me. Okay? I don't want to see you hurt. I don't want to see you upset. And I don't want to see you sick. Not at all. Bye. Good night. Take care.